Yo, what's up, chat? So, today, me on Akash's channel, or Akash is on my channel. I don't know who will upload this, but what we are trying to do is we are trying to talk on open topics. So, there is no motto or goal set to this topic. This would be the most boring conversations of all time, but we are just trying to have the conversation here. And we don't know what we will be talking about. Maybe the first point would be uh, the food we eat, and maybe by fifth point we are talking about geopolitics. So we don't know. So let's try. We'll just think it out, and we'll discuss. Okay, my recording it. Yeah, I'm recording it. I guess audio will be alright. Maybe there will be some fan noise in the background, but that's alright because whoever wants to listen will just wear the earphone, and if they are really if they really like you, Akash, or you inspire them, they will surely watch you. Definitely. Okay. तू पूछ रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ? कुछ रेडी लग रहा है। ये अगर रेडी नहीं लग रहा है क्वेश्चन तो सोचने पड़ेंगे कि टॉपिक में कैसे स्टार्ट करें। अच्छा ठीक है चल फिर what's your perspective or what's your idea about people terming मतलब जो भी नशे वाली चीज़ें as a bad things? Do you believe they are bad things, or do you believe they are just their ideology which is restraining them to accept those things? I particularly don't think that all the things which you consume for their मतलब it could be, it's not only about consumption, मतलब ठीक है दारू सिगरेट but even about on नहीं on नहीं मतलब on is मतलब हाँ वो तो अलग हो वो नहीं एडिक्शन एडिक्शन मतलब हाँ मतलब हाँ मतलब इन जनरल जो लोग कैटेगराइज करते हैं वाइसेस बट हाँ इन जनरल जो लोग कैटेगराइज करते हैं कि these things are not good. A good person would not do this thing. An ideal person would not do this thing. मतलब जो idea है a certain society ऐसा thought of the society जो सब collectively accept करते हैं कि यार नशे करना बुरी चीज़ है, जो भी चीज़ नशे होती है जिससे जैसे सिगरेट अल्कोहल है they are bad because they are नशा and they also have health side effects होते हैं. yeah समझ गया I would like to say that most of the things which are categorized good or bad, it is based on some experiences and why are you laughing? Yeah, I'm laughing at it. I'm just trying to explain. Yeah, so they are based on collective opinion and many times they rely on the outlier results. By this what I mean is if there is 100% consuming alcohol, there will be one person who abuses it and relies on it for emotional support or like just to numb themselves and whatever thing they abuse that certain thing and it results in tragedies and so like there might be some mishappenings but that would be the doing of the person but we blame it on alcohol because it does open you up a little, it enables you in some ways but it really depends on the person. Not every person who consumes alcohol. Maybe you're saying that to tell कि alcohol जो भी चीज़ हो that's good when it's done in limits मतलब लोग उसको abuse करते हैं उससे उससे लोगों को harm होता है. No, I think all of those things are enablers. They really enhances what you already are. That reflects your personality. If you are a person who's kind and considerate of others, even when they are high or even when they are drunk, they would be the same. It would be just 100x of the same person. But if you are inherently a bad person, if your thoughts are inherently evil, then it will amplify them. I just simply think that. So it really depends on who you really are
and not on the whatever thing you have consumed. अच्छा ठीक है मतलब ओके मतलब अगर पर्सन बंदा हरामी होगा तो हरामी हाँ। तो बहुत ज़्यादा फील होगा हाँ वही। एंड दैट्स हाउ वी कैटेगराइज दैट एज बैड थिंग्स बट मतलब ये तो चल मतलब ठीक है मतलब दिस इज गुड बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि गुड थिंग्स और बैड थिंग्स का कॉन्सेप्ट एट द फर्स्ट प्लेस चालू कैसे होगा इतना मेरी मतलब फर्स्ट प्लेस तो वही बात है अपना अब माइंड इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल हमारा माइंड इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि मतलब जो भी चीज़ें हैं इमोशंस और थिंग्स वो चीज़ अभी समझ के परे रहते हैं जैसे ओवर इवॉल्व माइंड एंड दैट ओवर इवॉल्व माइंड वो अपनी उसको बहुत नॉर्मली जैसे कैजुअली बोलते हैं उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बट दैट इज लाइक माइंड जस्ट बिल्ड अप कैरेक्टर ऑफ पर्सन वो बंदा उस कैरेक्टर को अपना आइडेंटिटी समझता है अब लोग उसने अपने कैरेक्टर को सिखा रखा है कि अल्कोहल इज अ बैड थिंग ड्रग्स इज अ बैड थिंग और एनीथिंग विच कॉजेज हार्म टू हिम और टू सोसाइटी इज बैड थिंग ठीक है नाउ हिज कैरेक्टर इनहेरिट्स दोज थिंग्स नाउ अब दिस guy has built a character he feels like anything against this will be a bit to his self respect और उसका वो ईगो टूटेगा तो he would not try he would not try ठीक है and he categorizes them as bad or this person thinks of characters as a tier okay they think character as a tier and they because they don't do things which harms themselves they possess a higher character higher order in the grid and those who don't or those who do वो तो क्या नहीं मतलब जो करते हैं ठीक है अब्यूज करते हैं वो सब्सटेंसेस दे हैव अ लोअर कैरेक्टर तो वो हमेशा उसको लुक आउट करेगा तो जो बंदा तेरे दोस्तों में ऑलवेज थी कोई बंदे को सोचो नहीं कर पाता तू जब उसके सामने करेगा ही विल लुक डाउन ऑन यू ही हैज अ बेटर कैरेक्टर देन यू हैज अ स्ट्रॉन्गर गेम टू प्ले इन द वर्ल्ड देन यू and he will despise you for that and वो भले तुझे बोलेगा कि ये सब तुझे नहीं करना चाहिए but he just knows that he वो तुझसे जीत गया है he just not because he has a higher character than you उसको character mock कर दिया But in this situation I want to point out that कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ and the other person looks down upon me but at the same time he could be looking down upon them because हम चार के बैठे हैं और मजे कर रहे हैं और एक बंदा बैठा है जिसने नहीं करना तो वो भी तो बोले ही नहीं क्या चूक दिया है उसको तो देख मजा है देखो बहुत देखो दिस इज वेरी कॉमन और सब तू अब देख जो इस बंदे ने कैरेक्टर मैट्रिक्स बनाया ही थिंक्स ही इज अबव एवरीवन इन द वर्ल्ड ठीक एंड फॉर एनी मोमेंट ऑफ टाइम I feel I don't know मतलब this is again my mind creating matrix all over the world ठीक है this is not ultimate truth just my mind my matrix against yours तो और क्या मैट्रिक्स नहीं बता रहा वो बहुत परफॉर्मेटिव चीज़ बना मैट्रिक्स का ये सब क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट नहीं वो सब वो परफॉर्मेटिव नहीं जो कोर्स बेचने वाले गूगल्स यूज करते हैं इसलिए मैट्रिक्स नहीं मतलब हम रियलिटी इन रियलिटी उन्होंने जो हायरार्की बनाई है उसमें लेकिन ये जो अपने हायरार्की बनाई है जो सोसाइटी उसमें वो बंदे का कैरेक्टर सबसे ऊपर है बट तुमने जो हायरार्की बनाई सोसाइटी में उसमें तेरा कैरेक्टर सबसे ऊपर है बट हाउ डू यू डिफाइन द कैरेक्टर इज दैट यू आर ट्राइंग सब्सटेंसेस because you know they exist in the world and anything which exists in the world you need to try that तो उसको मैंने कैरेक्टर बिल्ड करता है या स्विच आ जाता है और सुपर टाइम के कैरेक्टर पूरा कैरेक्टर बड़ा उसमें अपना कैरेक्टर तुम लोग एक दूसरे को कैरेक्टर बनाओ कर फेस ऑफ में तो तुम बोल नहीं सकते तेरा मेरा ईगो वर्सेस तेरा ईगो कॉल होते हैं बट इन योर माइंड यू आर थिंकिंग उसको आउट मॉक करना
रीलीज वाइट उसने वो सोचा कि उसको आपको आउट करना है बिकॉज अगर तू खुद को खुद के कैरेक्टर को ऊपर नहीं रखेगा ना फिर तू डिप्रेशन से चल जाएगा यू नीड दैट सेल्फ लव नार्सिसिज्म जो भी हो बट आई डोंट थिंक सो देयर आर ये नहीं लगता कोई खुद को नहीं पसंद करता है बट वो चीज़ अगर नहीं हो तो डिप्रेशन हो जाएगा आई बट इन रियलिटी और अलग होता है थर्ड पर्सन व्यू से अगर पता नहीं तू किसी को भी देखे लाइफ में तो तुझको तू हमेशा उसको उसकी वो चीज़ें ढूंढेगा जहाँ पे उससे कैरेक्टर आउट मॉक कर सकता है और तू सोचेगा नहीं यार मेरा ज़्यादा सीरियस That is क्या अगर मेन बदलते हैं टॉपिक की मैं बैटरी होगी क्यों अपनी if I wanted to change the name, but I have a related question. Okay, do you do this to a person whom you love as well? कैरेक्टर ऑटोमॉनी हाँ, love is a very strange feeling that I feel like that feeds human like the evolved brain that makes that recognize us ऐसा मुझे लगता है लव जब इमोशन में गेम में आता है तो यू फील दैट द कैरेक्टर यू हैव नीड्स समवन टू जस्ट हेल्प तुम दोनों एक लेवल पे ही करो यू नीड दैट कि तू इनकम्प्लीट है उसके बिना और सेम वो सोचता है ऐसा हो तू वो चीज़ नहीं सोचता तू ऐसा नहीं सोचेगा जिससे प्यार करता है उसके बारे में कि मैं उसको आउटविन तो नहीं कर रहा हूँ मुझे आउटविन तो नहीं कर रहा हूँ इफ़ यू आर एक्चुअली बिकॉज तू ऐसा हो तू उसको एज अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ समझने लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू डोंट थिंक एज अ सेपरेट बीइंग तुझे लगता है कि ये तो शी इज जस्ट मी एंड आई एम जस्ट हर्स ऐसा मैं कोई शी इज जस्ट मी बोलता हूँ साउंडेड बट she's just mine. she's She's mine. just me शी इज जस्ट माइन मतलब तू मेरी है शी इज मतलब हाँ, मैं भी तू ही है तू भी मैं ही Yeah, समझ गया. मे बी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा बट मैं बहुत डीप सोच रहा हूँ नहीं सही सोचा है but डीप टॉक्स विद डी हाँ इससे मुझे होमलैंडर याद आया और मैं होमलैंडर का he was raised as the strongest person on earth है और उसको कोई प्यार नहीं मिला मुझे he had to be grown that way like at the end I feel bad for Homelander because उसको कभी सही तरह से रेज नहीं किया right he all बचपन से उसको पता था he is the strongest person on earth because he is the strongest person on earth और उसको let's say the love वाला सेंस होता है काइंडर हार्ट होता है वो डेवलप नहीं हुआ and he just thinks that everyone owes him because he is the stronger than them और he owns everyone जिसको मारना चाहे वो मार सकता है he literally owns everyone हाँ but he I don't know he don't deserve that but उसका इंटरनल तो वही था पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मतलब उसका इंटरनल व्यू तो वही था कि he is above everyone and nobody in the world has power to defeat him. So everybody should kill him. And everybody should treat him as a god because he was actually god in that. but this has two sides of it na? He thinks he's superior but at the same time he seeks further validation. Yeah, well, the thing is, If I already think that I am better than you, then I won't need your validation. but I don't think so. He needed validation from a single individuality. He just wanted to be loved across the world, like how that would be controversial if I say that. So many but Are you हाँ, about to give an example? example नहीं दे रहा हूँ. It would have been